Alkyl is the very first homologous series we are going to talk about. It is not a compound, it is a branch. तो अगर आपको ब्रांच आती है तो उस ब्रांच में कुछ भी नया ऐड हो जाएगा तो बाकी कंपाउंड बन जाएगा. एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, which means that you have one more carbon. However many carbons you have, double them and add one more hydrogen. जिसका मतलब क्या है? Every carbon is joined to 2 hydrogens और एक end वाला 3 के साथ join हुआ है. ठीक है? So I'll start with the very first one. First one होगा families alkyl and first one is meth. So methyl. And second one will be ethyl. Third one? Propyl. Propyl. Very good. Butyl. Third, then butyl. Good. Then pentyl. Then pentyl. A molecular formula is basically you plug in the number. You have one carbon, right? So CH3. N की जगह 1 लगा दिया. For the second one, C2H5. For the next one, C3H7. All you have to do is double the carbon, add one more. Butyl is C4H. Double it 8 plus 1 9. C4H9. अब structural formula क्या होता है? Structural formula is when you tell what is attached to every carbon from one side of the molecule. So in the first one you have just one. So इसका structural formula का एक carbon है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है. Second क्या होगा? पहला carbon है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है. दूसरा carbon है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है. Structural formula में आप हर carbon का 1 by 1 बताते हो. अगले वाले में पहले के साथ 3 होंगे, दूसरे के साथ 2 होंगे, तीसरे के साथ भी 2 होंगे. अगले वाले में you have CH3, CH2, CH2, CH2. Do you notice something? In every one of them, we are adding a CH2. This is what you do in homologous series. You add a carbon and 2 hydrogen, you get the next series. Next member in the series. इसको जरा draw कर लेते हैं. Sir, एक question है. Yeah. So in any homologous series हम सिर्फ CH2 ही डालें तो अगला बन जाता है. Yes. अब इसको displayed formula देखते हैं. Carbon has 3 hydrogen attached to it. Fourth bond खाली है. अभी नहीं वहां पे कुछ भी लगा. यहाँ पे एक dot लिख देंगे to show कि this is where it wants to react. This is where we have space for one more. अगले वाले में पहले कार्बन 3 लगे हुए हैं. अगले कार्बन के साथ 2 लगे हुए हैं और हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए. This one does not have the fourth one. So यहाँ पे radical आ जाएगा. This is called a radical. That it needs to bond with something. It's incomplete. In the next one, again, we are just adding one more carbon, 2 hydrogen. So this, और यहाँ पे radical. अगले वाले में भी पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 2, अगले के साथ भी 2, अगले साल भी 2 और वहां पे radical. This is the alkyl series. Sir, displayed formula ऐसे क्यों है sir? वो आखिरी में भी H नहीं होना चाहिए. नहीं. Because alkyl is radical. Alkyl is branch. It is incomplete molecules. So last bond is always incomplete for them. इनसे हम बाकी चीजें बना सकते हैं. For example, if I add one more hydrogen to all of them, I will get alkanes. Alkanes का general formula है CnH2n+2. Alkyl का क्या था? 2n+1. इसका क्या है? 2n+2. Which means you're just adding one more hydrogen. So the first one will be methane because it is alkane. Ethane. Ethane. Next one. Propane. Next. Butane. Very good. Okay. Molecular formula. Remember the general formula. You can either start with alkyl or you can start with the general formula. C1H double plus 2. 4. अगला C2H6. H double plus 2. 6. अगला C3H8. Good. Next. C4H10. Perfect. Structure formula. 1 carbon, 4 hydrogen, done. Next. 2 carbons. ये तो displayed formula नहीं है sir. 2 carbon. Oh sorry, ये displayed formula. Structure formula इसका होगा C और displayed ये होगा. फिर इसका structural same होता है ना? सर इसका structural formula same होगा. As molecular formula, yes.
In the next one we have C2H6. So first carbon with 3 hydrogen, second carbon with 3 hydrogen. In other words, if you want to draw it, there are many different ways of thinking about it. एक तरीका ये है कि आप इस तरह कर लो, दूसरा तरीका इसको पकड़ो, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह सोचो कि पहले कार्बन के साथ 3 है, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 होंगे, पूरे हो गए, और कार्बन्स दोनों बना लो और then fill them up. Every carbon must have 4 bonds. First one has 1 already, 3 more. Second one has 1 already. Okay, let's do the next one. C3H8. First carbon, second carbon, third carbon. First वाले के साथ 3, दूसरे वाले के साथ 2, तीसरे वाले के साथ 3. जो एंड पे होंगे उन्होंने 4 बॉन्ड्स पूरी करनी है इस तरह से. जो मिडिल में होंगे वो तो दूसरे कार्बन से भी ज्वाइन हुए हैं. So just draw 3 chain carbon and fill it up. First की 4 bonds, second की 2 हैं, 2 और, third की 1 है, 3 और. सर इसको होगा 3 कार्बन के करोगे, पहले वाले तो के साथ 3, CH3 CH2 दूसरे वाले CH2 CH3 CH3 CH2 और CH3. Very good. और इसकी चेन कैसे होगी? सर चारों कार्बन्स और उनको फिल अप कर देना बॉन्ड्स 4 बना के सब. Yes. सर पहले वाले के साथ 3, दूसरे वाले के साथ 2, दूसरे वाले के साथ भी 2, फिर आखिरी के पास 3. Exactly. ऐसे ही किया. Alkenes have a double bond, which means you're removing hydrogen. So CnH2n हो जाएगा. Not 2n plus 1, not 2n plus 2. How does this work? So the first one is going to be ethene. Pay attention. It can't be methane because double bond एक अकेले कार्बन में exist नहीं कर सकती. So it will be ethene. Then next one. Propene. Good. Propene. Butene. But butene के isomers हो सकते हैं, इसलिए हमें but 1 और 2 बताना पड़ेगा. but 1 और but 2. हाँ. फिर उसके अंदर शुरू में 2 कार्बन के और पेट में भी बताना पड़ेगा. सर ये ब्यूटेन अगर एल्केन में हो, ब्यूटेन वगैरह हो, उसमें भी बताना पड़ता है? नहीं, उसमें तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या ही बताना है. ओके, मोलेकुलर फॉर्मूला C2H double that 4. Propene C3H6, C4H8. Very easy. C5H10. डबल करना बस. अच्छा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेट्स ट्राई इट. आपने कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देनी है 2 कार्बन्स के बीच में. सो आई विल स्टार्ट विद द डिस्प्लेड फॉर्मूला. 2 कार्बन बनाए, उनके बीच में डबल बॉन्ड. So first carbon is C with 2 hydrogens, second carbon is C with 2 hydrogens. Let me try the next one. 3 carbon बनाए, कहीं एक पे double bond बना दो. Let's say I do it here. Now fill them up with hydrogen. इसकी 2 हैं तो 2 और, इसकी 3 हैं तो 1 और, इसकी 1 है तो 3 और. So my structural formula is going to be C with 2 hydrogen, C with 1 hydrogen, C with 3 hydrogen. ये मेरा structural formula हो गया. Now in the next one, I have a choice. I have 4 carbon chain, which means I have a choice. I can either put the double bond here on the first carbon, or I can put it on the second carbon. Third का नहीं कर सकता because that's again one from the other side. And this way I am getting what we call isomers. They are atoms with the same general formula. They're both C4H8. बट इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है. पहले वाले का क्या है? CH2 CH CH2 CH3. दूसरे वाले का क्या है? CH3 CH CH CH3. So much difference. They are isomers. Isomers, that's what we call them. Same molecular formula, different structure formula. इनका नाम भी चेंज हो जाएगा. This is but1ene. This is but2ene. Go on, do it for the next one. So but2ene सर इसमें तो 3 choices है ना. Okay, are you done? Yes. So I'll give it a try and then you can see कि आपने ठीक किया कि नहीं. So first of all, I'm going to draw 5 carbons in a row, multiple copies of this. I'll try to see अगर 3 बना सकता हूँ. हो सकता है मैं ना बना सकता हूँ. Now this one is going to be I'm going to put a double bond anywhere. So let's start with this one. 1 double bond, and this one 1 double bond, and in this one the third carbon with a double bond. Okay, but there's a problem. If I do the third carbon with a double bond, it is the same as this one. Yes, sir. Yeah, so it doesn't make sense. All right, so abhi ke liye I will just focus on those 2.
So now I'll fill them up. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. So I'm getting CH2, CH, CH2, CH2, CH3, and this one is going to be pent 1 ene. And this one, I'm going to fill them up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So this is CH3, CH, CH, CH2, CH3, and this one's going to be pent 2ene. अच्छा, I can clearly see कि ये मेरे पास ऐसा ही है, लेकिन क्या मैं इसको फर्दर कुछ चेंज कर सकता हूँ? Let me try this. Let's say मैं ये पकड़ता हूँ. I'll make a copy of this. Erase this इससे one. ब्रांच बना ले. And here's what I'm going to do. मैं ब्रांच बनाने लगा हूँ. मैंने इसको इस हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर देना. लेट्स सी, मैं उससे पहले क्या मैं इस हाइड्रोजन से कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई दिस. मैं इसको पकड़ता हूँ. नहीं सर, वो तो चेन सेम रहेगी. यहाँ पे लगा देता हूँ और इधर हाइड्रोजन लगा देता हूँ, लेकिन वो चेन मेरी वही बन गई. पहले भी 5 ज्वाइन हुए थे, अब भी 5 ही ज्वाइन हुए हैं. Doesn't really make a difference. So what I can do is I can displace it with some other one. What if I try to take this one and place it here? अब मेरे पास ब्रांच आ गई. Because now I can either join these two or I can join these 4. But मेरे पास ब्रांच इन either case रहेगी. ये मेरा मेन स्टेम है और ये ग्रीन में मेरे पास green color में I have what's happening here. This is my branch. So let me label them. My main stem is but2ene. But the second carbon also has a branch. So 2-methyl. सर 2 क्यों लिखा है मिथाइल के Because this पीछे? branch is at the second carbon. Now try to make a branch isomer of उसी this तरह one. 2 मिथाइल करना है. हाँ जी, जैसे कल सीखा था. So try to make a branch isomer of pent2ene. Pent2ene से कुछ और बनाओ. अब अगली चीज ये है कि अगर मैं यही पकड़ू ना ये सारे और इनमें किसी एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा दूं तो मेरा एल्कोहल बन जाएगा. और अगर मैं किसी कार्बन में से ये कर दूं, मतलब OH लगाया, लेट्स सपोज मैंने इसके साथ OH लगाया, तो ये इथानोल बन जाएगा. और फिर मैं इसी में से, पे अटेंशन, अगर मैं इसी में से ये 2 हाइड्रोजन निकाल के एक ऑक्सीजन लगा दूं, एथेनोइक एसिड बन जाएगा. दोबारा से देख लें. If you replace hydrogen with OH, you got alcohol. You remove 2 hydrogen and add 1 oxygen, you get carboxylic acid. That is called oxidation. So now your तो job किसको is कहते हैं ऑक्सीडेशन? when you remove 2 hydrogen and add 1 oxygen. Okay.